we do have the support swelling in for Eknath Shinde. I'm joined by Ankit, who is right outside Shiv Sena Bhavan. Ankit, what is the sentiment you are picking up there? Definitely, we are seeing a growing number of MLAs supporting Eknath Shinde, but at the same time, on ground, there are several Sena workers who are still in favor of Uddhav Thackeray. Yesterday, we also saw Uddhav Thackeray dig in his heels as in a massive show of strength as he moved from Varsha back to Matoshri. What are you picking up right outside? What's the situation outside Sena right now? Yes, that's absolutely right. All of the MLAs, many MLAs are supporting Eknath Shinde, but the Karyakartas of Shiv Sena, they are not supporting Eknath Shinde. All the Karyakartas of Shiv Sena, with Uddhav Thackeray right now. I have a Karyakarta over here in Sena Bhavan. They wants to talk to. They will speak about what is the current situation about Maharashtra government right now. मैम, अभी की जो फिलहाल परिस्थिति हुई है, जहाँ पे संजय राउत जी ने कहा है कि वो अलियंस तोड़ देंगे, उनको आना होगा, लेकिन 40 एमएलए को एकनाथ शिंदे आना होगा, उसके लिए आपको क्या लगता है? आना होगा, ये हम भी चाहते हैं। हमारी शिवसेना टूटी नहीं है, हम भी चाहते हैं, लेकिन एक बात बता देती हूँ, अगर उनके मन में है आना नहीं है, तो हमारी शिवसेना, ये शिवसैनिक जो है वो मजबूत है, उनका मॉरल आज भी वही है, कुछ भी नहीं होगा। हमारी शिवसेना हम लोग फिर से खड़ी करेंगे और वही जो पहला हमारा जो डॉल था, जो मॉरल था, वही रहेगा। जो बाला साहब की शिवसेना थी वही कायम रहेगी। और ये जो शिवसेना के लिए जो हमारी महिला आघाड़ी है, खास करके वो शिवसेना की एक अलग से ताकत है, और ये ताकत उद्धव साहब के पीछे एक दीवार के जैसी खड़े रहेगी। और आज भी हम लोग, अगर हमें यहाँ कहेंगे कि यार रात भर खड़ा रहो, हम लोग खड़े रहने के लिए तैयार है। ये हमारी निष्ठा है, और ये निष्ठा को जो तोड़ेंगे, निष्ठा को जो लात मार के जाएंगे, उनका कभी भला नहीं होगा। जो भी शिवसेना को छोड़ के गया है, उसका कभी भला नहीं हुआ है। ये इतिहास है, हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री फिर से दोहराई जाएगी। आपको क्या कहना है? हम जो सब एकजुट है, हम लोग एक साथी रहेंगे, साथ के साथी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हम लोग को आज जो रखा, उनके पहचान के वजह से हम लोग की ही पहचान है। तो हम लोग उनसे गद्दार नहीं करेंगे। जो गद्दार है वो गद्दार चले गए, जो है वो यहाँ है खड़े, और ये सबूत है। सब एक निष्ठा के हम लोग रहेंगे, यहाँ उनके साथ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमको सिखाया है कभी गद्दार मत बनो, एक निष्ठा से रहो। राम के साथ जैसे सेना खड़ी थी, वैसे हम उद्धव साहब के साथ ये पूरी सेना खड़ी है। So, as you heard that they are saying the way all the Sena is with Ram, this Sena is with Uddhav Thackeray right now. They will not be disloyal with Uddhav Thackeray. Who are disloyal with Uddhav Thackeray, they left, but we will be loyal with Uddhav Thackeray till the end. Right, Ankit, now that you are on ground and you are talking to the grassroots level Sena workers, one allegation that's being made by defecting, or rather I should say rebel MLAs here, the allegation that's being made by them is that Uddhav Thackeray was inaccessible, he didn't really interact with the grassroots level workers. On that account, what are these workers saying? What is their response to the allegations that are being made by the rebel MLAs? Yes, before that also I had a word with them when I asked him about कि Uddhav Thackeray used to wait all the MLAs, but they are saying that no, Uddhav Thackeray is not that kind of a person who make them wait. It's all are the false allegations. Anybody who wants to leave the party, they will leave the party, and anybody who wants to stay in the party, no matter whatever the situations come, if they are facing any problems, let them come, let them talk. They have to talk to the Uddhav Thackeray if there is any problem. They didn't talk with Uddhav Thackeray, but they are directly boycotted him, and they are directly left the city, and they are in the Guwahati right now. This is completely what they are saying right now. All right, Ankit, thank you so much for getting us all those Sena voices from ground zero. Then also, I'd like to thank Abhishek, who joined us with all the updates on what's happening in Guwahati and all the number game. Thank you so much for getting us all those details.